The Honor 8S is the latest budget smartphone from Honor. ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी रीज़नेबली प्राइस्ड है. ऑन द बॉक्स इट सेज इट्स 19,000 रुपीज़, लेकिन आप ऑनलाइन इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर प्राइस के अंदर ढूंढ सकते हो. इसके साथ साथ इट्स आल्सो सेज कि इसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स भी आते हैं. एंड यू माइट बी थिंकिंग के कवर और ईयरफोन तो हर किसी फ़ोन के साथ आते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट यूज्ड मैनी फ़ोन्स जो कि इस कीमत के अंदर ईयरफोन्स भी देते हो. So it's pretty cool that they are giving these things at this price. Alright, let's talk about the phone. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए. Appearance wise, I'm actually happy with the phone. इसके ऊपर एक नॉच है and there's a small chin at the bottom. कुछ साल पहले जो फ़ोन 15-20,000 की रेंज में होते थे they didn't look good at all. लेकिन अब with this phone I feel like that has changed. This looks really modern. The display size is 5.71 inches और इस फ़ोन का जो footprint है वो काफ़ी compact है. Like you can easily use this phone with one hand without any issue. The rest of the phone is made of plastic, लेकिन इसकी बैक पे एक texture है जिससे फ़ोन easily scratch नहीं होता. ओवरऑल इट्स अ प्रीटी सिंपल डिज़ाइन. इसमें कोई चीज़ फैंसी नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद है. फॉर द प्राइस आई थिंक दिस इज़ रियली गुड, स्पेशली द फ्रंट पैनल. द डिस्प्ले साइज इज 5.7 inches एंड इट्स अ 720p LCD पैनल. फ़ोन इतना कॉम्पैक्ट है कि आई फील लाइक 720p इज़ अ गुड रेजोल्यूशन इस साइज़ के लिए. लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. लाइक द डिस्प्ले लुक्स गुड, द फोटोज़ लुक गुड. ऑब्वियसली ये 1080p पैनल जितना शार्प नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड रैदर हैव बेटर कलर्स देन अ मोर शार्पर स्क्रीन, क्योंकि इन द लॉन्ग रन बेटर कलर्स जो हैं वो आपको बेहतर एक्सपीरियंस देंगे. कलर्स वाइज इस स्क्रीन के ऊपर एक थोड़ा सा ब्लू टिंट है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स वेरी नोटिसेबल. ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ रियली ग्रेट डिस्प्ले. आई एम नॉट श्योर कि आप इतनी छोटी स्क्रीन के ऊपर मीडिया क्यों कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू यू कैन विद दिस फ़ोन. इस फ़ोन के अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा है बैक पे और 5 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट पे. अगर आप इस प्राइस के अंदर फ़ोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली देयर आर गोना बी सम कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड द कैमरा इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्रोमाइज़ेस. इन गुड लाइटिंग आप इससे काफ़ी डिसेंट फ़ोटोज़ ले सकते हो विद गुड क्लैरिटी, लेकिन मीडियम और लो लाइट के अंदर इट रियली शोज़ कि ये अल्ट्रा बजट कैमरा है. फॉर द प्राइस दिस फ़ोन इज़ गोइंग ऑन आई डोंट रियली माइंड. आई मीन इट इज़ एन अल्ट्रा बजट फ़ोन एंड इफ़ इट वॉज पॉसिबल टू गेट ऑल द फीचर्स इस प्राइस के अंदर दैन बड़े फ़ोन की क्या ज़रूरत होगी. सो आई अंडरस्टैंड दैट दे हैड टू कट कॉर्नर्स एंड इफ़ यू हैव टू टेक फ़ोटोज़ विद दिस फ़ोन यू कैन, बट आई डोंट रियली रिकमेंड इट. परफॉर्मेंस वाइज दिस हैज़ अ MediaTek A22 प्रोसेसर जो कि काफ़ी लो एंड प्रोसेसर है. सो इन दिस फ़ोन यू कैन रियली एक्सपेक्ट इट टू डू रियली हैवी एक्सटेंसिव टास्क, बट फॉर एवरी डे नॉर्मल यूज़ इट्स कम्प्लीटली फाइन. इसके अंदर Android 9 और EMUI 9 है, सो यू गेट ऑल द लेटेस्ट फीचर्स लाइक जेस्चर नेविगेशन. बट बिकॉज इसका GPU इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आई वुडंट रिकमेंड यूजिंग जेस्चर नेविगेशन ऑन दिस फ़ोन. उसके अलावा यूजुअली देयर इजंट मच लैग गोइंग थ्रू द UI, लेकिन अगर फ़ोन थोड़ा सा हीट अप हो जाए दैन यू आर गोना एक्सपीरियंस सम लैग. ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इफ़ यू वांट अ फ़ोन जो कि नॉर्मल एवरीडे टास्क आराम से कर सके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर एंड फॉर कॉलिंग एंड टेक्सटिंग, तो उन कामों के लिए दिस फ़ोन इज़ परफेक्टली फाइन. आई वुड से यूज़ फेसबुक लाइट एंड मैसेंजर लाइट, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको बेहतर स्मूदर एक्सपीरियंस देंगी इस फ़ोन के साथ. फॉर गेमिंग यू कैन प्ले नॉर्मल आर्केड गेम्स विदाउट एन इशू, लेकिन हैवी एक्सटेंसिव गेम्स विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग. देयर इज़ अ 30-20 मिलियन पावर बैटरी इन दिस फ़ोन, और ये सुनने में काफ़ी स्मॉल लगेगी, लेकिन क्योंकि ये फ़ोन इतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, यू कैन ईजिली लास्ट दिस बैटरी फॉर अबाउट अ डे एंड अ हाफ. सो विद दिस फ़ोन आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट द बैटरी टू मच. ओवरऑल आई थिंक अगर आपको एक फ़ोन चाहिए बिल्कुल बेसिक टास्क के लिए, या फिर आप स्टूडेंट हो एंड यू जस्ट नीड अ फ़ोन टू गेट बाय, देन आई वुड रिकमेंड दिस फ़ोन. व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे,
and I just had to get a phone for around 15,000-16,000 rupees. और उस टाइम के अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं था. In comparison now you can do pretty much anything on this phone. Like थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हो. So if you just need a phone to get by and you don't want to spend a lot of money, then yeah, get this phone. Thank you for watching. Please subscribe to my channel if you are new, and I'll see you in the next one. Peace.